On myself, Suman Chetri, and my presentation is about congestive heart failure. CHF is a condition in which the heart's function has a pump inadequate to deliver oxygen-rich blood to the body. CHF is a condition that is usually chronic, is a most commonly used when referring to right and left side heart failure. Heart failure can be defined as a physical state in which the heart is unable to pump enough blood to meet the metabolic needs of the body at rest or during exercise, even though feeling pressure and adequate. जिस कंडीशन में नॉर्मल हार्ट जब पंप करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, कंडीशन है जिसमें हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, और जिसमें हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है और जितना हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उतना फ्लो नहीं कर पाता है, उसे CHF कहते हैं. उसमें ये देखिए, ये एक नॉर्मल हार्ट है और इसमें अच्छा से ब्लड फ्लो हो रहा है और ये हार्ट अच्छा से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ठीक तरह से फ्लो कर पा रही है. और यहाँ पे देखिए, डैमेज एंड एक्सपेंडेड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये डैमेज एंड एक्सपेंडेड लेफ्ट वेंट्रिकल है. जो इसमें ये डैमेज वेंट्रिकल, जो डैमेज हार्ट जो हमारे बॉडी में ठीक तरह से ब्लड और ऑक्सीजन को ठीक तरह से फ्लो नहीं कर पाता. इसमें सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ही डैमेज हो सकता है. इसमें राइट वेंट्रिकल भी डैमेज हो सकता है और इसमें सारा हार्ट भी डैमेज हो सकता है, पर ये पंप करना स्टॉप नहीं हो सकता है. सारा These are the symptoms. Right side heart failure. The inability of right side of the heart, right ventricle to adequately pump venous blood into the pulmonary circulations. This causes a backup of fluid in the body, resulting in the swelling and edema due to the elevated pressure and the congestive in systemic veins and capillaries. So, left side heart failure. This is the most common heart failure. The inabilities of the left side of the heart, left ventricle to pump into the systemic circulations. Backup behind the left ventricle causes accumulations of fluid in the lungs. Causes elevated pressure and the congestion in pulmonary veins and capillary. राइट साइड हार्ट फेलर में होता है, जब राइट साइड हार्ट फेल हो जाता है तब हमारे शरीर फूल जाते हैं, फूलना स्टार्ट होता है. और लेफ़्ट साइड में होता है हमारे लंग्स में इफ़ेक्ट. जब लेफ़्ट साइड हार्ट डैमेज हो जाता है तब इसमें लेफ़्ट साइड हार्ट फेलर जब लेफ़्ट साइड हार्ट फेल हो जाता है तब हमारे लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है और पुलमोनरी वेन्स एंड कैपिलरी में कॉन्जेक्शन हो जाता है. इसकी वजह से लेफ्ट हार्ट फेलर होता है. Systolic heart failure versus diastolic heart failure. Systolic heart failure. This also when the heart ability is to contract decrease. The heart cannot pump with enough force
enough force to push a sufficient amount of blood into the circulation. Blood coming into the heart from the lungs may back up and causes fluid to leak into the lungs. This a condition known as a pulmonary congestion, diastolic heart failure. This occurs when the heart has a problem relaxing. The heart cannot properly fill with the blood because the muscles has become stiff, losing its abilities to relax. This from me leads to fluid accumulations, especially in the feet, ankles, and legs. Some patients may have lung congestions. This is ventricle filling normal with blood, and this is the ventricle pumps out of about 60% of the blood. This is normal heart with the enlarged ventricle filled with blood, and this is systolic disinfection with the ventricle pumps out less than 40 to 50% of the blood. This is diastolic dysfunction heart. The stiff ventricles filled with less blood than normal, and here the ventricles pumps cut about 60% of the blood, but the amount may be lower than normal. Cause of congestive heart failure. Heart failure also occurs when the myocardium cannot maintain a sufficient cardiac output to meet the metabolic needs of the body. Failures can result from either systolic or diastolic dysfunctions. In systolic dysfunctions, most common are ischemic heart disease and hypertension, coronary artery disease, hypertension, large salt intake in diet, metabolism disorders, abnormal heart rhythms, conduction defects, infections of the heart muscles, diagnostic evaluation, patient history, and the physical examinations. Doctors will start with the physical exam and medical history. He will listen to the heart rhythm, and also they will check the electrocardiogram, echocardiogram, chest X-ray, exercise test, stress test, angiogram, cardiac CT or MRI. मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को हार्ट फेलर पेशेंट को एक से अधिक दवाई दिया जाता है जिसके पेशेंट के शरीर के पानी और सोडियम को कम किया जाता है और को बढ़ाया जाता है.